Thanks to the students at GNLU Silvassa campus that they have initiated today a movement to make not only the campus of GNLU green, but also the entire Union Territory green by planting lots of trees throughout this year. Today we have started the Eco Club by planting trees in the campus, and I wish that the students along with the faculty members, they continue this initiative and take it throughout the Union Territory, making the Union Territory clean and green. जो इको क्लब का इनॉग्रेशन किया है, इसके तहत हमने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस में बहुत सारे 100 पौधे आज के टाइम पे लगाने के लिए हमने लगाए हैं। बच्चों ने एक एक पौधा अडॉप्ट किया है और वो पूरा उसकी देखरेख करने वाले हैं। एंड हमने ये डिसाइड किया है कि ये हम एक जो है कंटिन्यूटी में रखने वाले हैं कि आने वाले हर वीक हम कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि जागरूकता जो बढ़े इसके बारे में, लोगों को पता चले, वो भी जो अपने रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड वे में कंज्यूम करें, बचाएं, और ताकि हम कुछ बचा सकें अपने फ्यूचर के लिए भी। जो ये हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है इको क्लब का, तो ये सिर्फ इस तहत नहीं है कि हम इस कैंपस को ग्रीन बनाएं, बल्कि हम अवेयर करना चाहते हैं यहाँ की सारी सोसाइटी को, सब लोगों को, कि कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, आज के वक्त में पूरा अपने प्लैनेट को सेव करना। जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी और अदर रिसोर्सेज का जो यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस पूरे सोसाइटी को, वर्ल्ड को एक अच्छा इन्वायरमेंट अपने फ्यूचर के लिए बना सकें और अपने फ्यूचर जनरेशन्स को पास कर सकें। एक ये जो पूरी ट्रीज़ की धरोहर है उसको, जो कि एक पूरा एक ख़जाने के जैसे है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी और फ्यूचर के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए कि हम अभी से इसमें अपना जो थोड़ा सा वक्त दे सकें और इसको बहुत आगे तक लेके जा सकें। કોલેજનું નામ છે ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી સિલવાસા। અમે અહીંયા પોલ્યુશન ડિક્રીઝ કરવા માટે ઝાડવાનું વાવેતર કર્યું છે અને અહીંયા એમનું જતન કરીશું। અમે અમારા 5 વર્ષ દરમિયાન એ ઝાડવાને અમે વધુ ઉગાડીશું અને આગળ જ આ બધા સારા કામો કરતા રહીશું આ વર્લ્ડમાં સારું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે। સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ અવર ડાયરેક્ટર સર શાંતનુ કુમાર સર એન્ડ અધર ફેકલ્ટીઝ ઓફ અવર, એમને આ બધું શીખવાડ્યું અમને નવું નવું, અને અમારા જુનિયર્સને બધી આ બધી વસ્તુ અમે શીખવાડતા રહીશું અને એમને પણ આ પ્લાન્ટેશન કરાવતા રહીશું અને અહીંયાનું કેમ્પસનું અને આખી વર્લ્ડનું એન્વાયરમેન્ટ સારું કરીશું અમને। हमारे कॉलेज जेएनएल सिलवासा में इको क्लब का इनॉग्रेशन करा है, जिससे हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें, उसके हित में कुछ स्टेप्स उठा सकें। और हमने आज अपने कॉलेज में ट्री प्लांटेशन करा है, जिसमें हम सभी 30 छात्रों ने मिलकर पेड़ उगाए हैं, जो कि इसकी हम रक्षा करेंगे, पानी देंगे और आगे भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा वादा है और संकल्प है। This is the first time that all of us have united for a wonderful cause, for the cause for which the entire globe is paying its attention to face the challenges posed by climate change. You all know that the contribution of a tree, a plant in one's life, and that is why we thought of taking the mission life of our Honorable Prime Minister as an inspiration, from where we thought that we will do everything possible to accomplish whatever is stated in the mission life. Mission life is nothing, it's not a very complex concept. Even when you come out of your classroom, you switch off your electricity, the tube lights, the fans, and then that takes care of the environment. It doesn't mean that you need to do a great service to the community to save the environment. Just switching off the light whenever it is not required, and maybe planting a tree, watering it, maintaining it, keeping your campus clean. Do not dump waste and add the burden to the municipality in collecting this waste, and they do not know how to dispose it of. It creates a lot of problems. So all these small initiatives taken by you will definitely help in the entire world facing the challenges posed by the climate change and the issues.